Assalamu alaikum and welcome to Just Law on IQRA TV. I'm your host Ilyas Bulbulia and I'll be with you for the next hour. As our regular viewers are aware, on Just Law we normally discuss an area of law which is of interest to you, our viewers. Secondly, more importantly, Just Law is a live show. So whatever questions that you have on any aspect of English law, please feel free to pick up the phone and give me a ring. Hopefully I will be able to give you some guidance in relation to the questions that you have. On this show, I should be able to advise on most aspects of English law, matters ranging from immigration law matters, family law matters, personal injury matters. As long as they relate to the English legal system, please feel free to pick up the phone and ask me whatever your questions are. Just a couple of points before we get going with today's show. Obviously, on a live show, it's sometimes difficult to take very detailed information live on air. Now, if it transpires that your query is complicated, then I'll ask you to leave your number with the control room and I will try and give you a ring back. If you do leave your number, just please try and make sure that it's an accurate number you leave, otherwise I'm going to have difficulty returning your call. Secondly, obviously on a live show it's not possible to look at documents before advising callers. If it transpires that we do need to look at your documents before we can advise, then I will advise you to again leave your number and I will make arrangements to look at your documents before giving you more thorough advice. But in my experience, the vast majority of calls that we receive live on air, I should be able to advise on those matters live on air. Now, the topic for today is something that we touched upon last week. We had a number of calls coming in, so it's not something that we were able to conclude last week. But the topic for today is the position, the unfortunate position of those people who are in the United Kingdom who have overstayed their visas. What can they do to regularize their stay in the United Kingdom? It's something that we touched upon last week. We didn't really get through it, so I just want to start on that topic today. But as I said at the outset, it is a live show. So whether your questions relate to immigration matters, whether it relates to the position of overstayers, or generally it relates to other matters, it could be about getting a spouse visa, it could be a question relating to nationality. Whatever it is, the number that you can call on will appear at the bottom of the screen. Now, topic of the day, the position of overstayers. What can they do to become legal in the United Kingdom? Obviously, not having a visa in the United Kingdom does present real practical problems for those who are unfortunate enough to be in that situation. First of all, one of the biggest impact of not having legal residence in the United Kingdom is that you're not able to legally work in the United Kingdom. So wherever you go for employment, most employers will ask to see your proof of residence, which causes difficulties. Let me take the first call for today and then I'll return to this topic. हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि मैं अपनी भेज रहा हूँ एप्लीकेशन सिटीजनशिप के लिए। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भेजें उसके साथ वो एम्प्लॉय लेटर और साथ में जो वेजेस स्लिप और पे 60 है। तो पे 60 वाला सब लगा दी मैंने और करंट जो भी मेरे पास थी प्लस पे स्लिप लगा दी है और मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भेज रहा हूँ। तो क्या लाजमी है कि मैं वो भेजूँ उनको एम्प्लॉय लेटर एज वेल? जी नहीं, वो लाजमी नहीं है। ये लास्ट 6 months 8 months में द होम ऑफिस ने ये इंट्रोड्यूस किया है कि आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी भेजो, मगर इसमें टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मिनिमल डॉक्यूमेंट्स उसको भेजते हैं, couple of P60s, couple of wage slips, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। दे नेवर कम बैक। वो कभी भी वो कांटेक्ट नहीं करते एप्लीकेंट को और कभी भी किसी को नहीं कहते कि हमको डिटेल में चाहिए, लास्ट 5 years के P60s चाहिए, हमको लास्ट 6 months के वेज स्लिप्स चाहिए। कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि उसने ऐसा किया हो। सो जो भी है आपके पास वो भेज दो। फ्यू P60s, लास्ट 3 months वेज स्लिप्स, वो ठीक है, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल।
तो hopefully that answers your question, but definitely इसमें कोई problem नहीं है. Yeah, let's take our next call. I think that's been dropped. Okay, so just I did cut off the first caller very quickly, but as I said, there's no problem in terms of the financial requirement when you apply for nationality. Whatever you have, a couple of P60s, last few months of wage slips is sufficient. As I said, in my experience, the Home Office has never come back when I have submitted an application and said, we want more financial documents from you. So don't worry about that. Don't look at that in too much detail. Send whatever you have and leave it at that. Hope that answers your question. Okay, let's then return to the topic for the day, which is the position of overstayers. And as I said at the outset, whatever your questions are, doesn't have to relate to this. Please feel free to give us a ring on the number that appears at the bottom of the screen. Now, position of overstayers, it's a very difficult situation to be in when you don't have a proper visa to live in the United Kingdom. The practical effect, first of all, you're not able to legally work in the United Kingdom. If you leave the country, there's no way of coming back because you obviously don't have a visa that you can show at the port of entry. Sometimes it's difficult to access medical care. Let me take the next call for day and we'll come back to this. Hello, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ji walaikum salam. Ji bhai. Yeah, actually I want to ask about my case, Okay, that's fine. Okay. You're live on air, so you fire away. Ask me whatever your question is and hopefully I'll try and answer it. Yeah, my question is that I was living in UK for 10 years. Okay. So basically I didn't apply for any case at the moment. Okay. So I want to know that if I apply now, so what I can apply for it. Okay. So are you single at the moment or do you have wife and children? No, I'm single at the moment. You're single. And how old are you approximately? I was 30 years old now. 30 years old. Okay. All right. Okay. The problem is this. At this moment in time, the law is that a single person, no wife and children, they must have lived in the United Kingdom for 20 years before they will be granted any kind of visa. So at this stage, my advice to you is there is no point applying at the moment. You will simply waste your money if you apply now. That's the position now. What could happen in the next year, in the next 18 months, is that that law which says you must have lived in the UK for 20 years, that may be relaxed, that may be changed. Because if you remember about 6 months ago, 1 year ago, one of the announcements that Boris Johnson made was to entertain the possibility of an amnesty, like we had roughly about 10-15 years ago. We had a similar scheme whereby anybody who'd overstayed, this was around late 90s, early 2000, okay, anybody who'd overstayed, they were granted indefinite leave to remain in the United Kingdom. Now, something similar might be introduced, but you have to really wait and see. My advice is don't make an application now because you'll lose money. They will simply refuse the application. You'll lose £1,000, £2,000, you won't get anything. Better off waiting. If the government, after the elections taken place, after we've had Brexit, if it does occur, they will look at the immigration system in 21. That's what they're saying. It's possible that in 2021, in a year and a half's time, a new system might be introduced for somebody who's overstayed. Watch what's going on, and when they introduce something new, possibly in 2021, apply possibly at that stage, but don't apply now. You're literally going to waste your money. Okay, does that answer your question? Yeah. All right. Okay, thank you very much for your call. Thank you. Okay, Thank you. Thank you. So it just so happens that we are looking at the position of overstayers. And one of the first things I wanted to look at actually relates to this last call that we received, which is the position of somebody who's single,
who's overstayed in the United Kingdom. It may be that their visa has expired after they initially came to the United Kingdom with a valid visa. They could have come with a spouse visa, with a visitor visa, work visa, for whatever reason that's expired, and their status now is that of somebody who's overstayed. It could be that, or it could be that they came within the United Kingdom as an overstayer. We'll look at that in greater detail after we've taken the next call. Hello, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक जी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आप कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी भाई अभी जी मैं डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अप्लाई हुआ हूँ। जी ठीक है, ओके। तो अगर मुझे रिफ्यूज़ करे हाँ तो मैं रेफ्यूजी वीज़ा के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ? जी। आपने जो डोमेस्टिक वायलेंस पे जो केस डाला है, तो उसका बैकग्राउंड क्या है कि आपको पहले वो स्पाउस वीज़ा मिली थी, वो जी शादी की वीज़ा पे आप यूके आए थे? जी ऑलराइट, ओके। तो डोमेस्टिक वायलेंस का आपकी मैरिज ऑब्वियसली ब्रेक डाउन हो गई, तो आपने डोमेस्टिक वायलेंस का एप्लीकेशन डाल दिया है? जी। कुछ जवाब आया होम ऑफिस का अभी तक? क्या वेट कर रहे हैं आप? वेट कर रहा हूँ। जी जी ठीक है। पहले जवाब शायद रिफ्यूज़ल एक मरतबा रिफ्यूज़ किया था उन लोगों ने। ओके ऑलराइट, ओके। फिर से रिव्यू किया था हमने। जी ऑलराइट। सो वो अभी प्रोसेस में है, रिफ्यूज़ल, उसका जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, यानी कि आपने ये कहा ना कि असाइलम का केस डाल सकते हैं, यानी जी जी। असाइलम का क्या है कि वो एनी टाइम आप डाल सकते हैं असाइलम का केस। अगर आपके पास वीज़ा है स्पाउस का, अगर आपकी डोमेस्टिक वायलेंस का एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गया है, आप ओवरस्टे हो गए हैं, इट डजंट मैटर, असाइलम का केस आप एनी स्टेज पे डाल सकते हैं। सो आप जो पूछ रहे हैं ना कि ये अगर डोमेस्टिक वायलेंस का जो अभी आपका चल रहा है, जुडिशियल रिव्यू में जो चल रहा है, अगर वो एप्लीकेशन में आप अगर सक्सेसफुल नहीं हुए, तो आपके पास वो ऑप्शन होगा कि आप असाइलम का केस डाल सकते हैं, और उसका प्रोसेस भी फैली सिंपल है। और कोई रास्ता है इधर स्टे करने के लिए? सो लेट्स से ये फर्स्ट मैरिज है, वहाँ से मैरिज ब्रेक डाउन हो गई और आपने डोमेस्टिक वायलेंस का रूट ट्राई कर लिया। अगर वो अनसक्सेसफुल है, ठीक है, आप असाइलम का एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपका बेसिस है वो बेसिस पे। अगर वो भी अनसक्सेसफुल है, तो रियलिटी ये है कि इसमें यही ऑप्शन है कि अगर आपकी कोई और जगह पे शादी हो जाए, कोई ब्रिटिश लड़की के साथ, या तो जिसके पास इंडेफिनिट लीव है, और शादी के बाद अगर कोई आपका वाइफ प्रेग्नेंट हो जाए, तो वो एक पॉसिबिलिटी है कि एट दैट स्टेज आप वो बेसिस पे ट्राई करें। अदर देन दैट अनफॉर्चुनेटली कोई और बेसिस नहीं है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई, जी थैंक यू आपका कॉल करने। जी जी एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मेरी मिसेज आई थी इधर स्पाउस वीज़े पे। जी ओके। एंड फिर अभी उसका इस दिसंबर में मैंने उसका वो 2.5 years का ख़त्म हो गया है, तो अप्लाई उसका अभी दिसंबर में अप्लाई करना है। जी ठीक है। लेकिन वो एक हमारा बेबी लास्ट ईयर में बॉर्न हुआ था, एक बेबी उन्होंने इस साल बॉर्न किया है। जी। So since the baby born and because they doing a C-section and तो उसके बाद वो उनकी legs on the spine is काम नहीं कर रहा, तो वो just बेड पर हैं। तो उसके बारे में 2 क्वेश्चन से आपसे पूछने थे कि क्या वो उनका वो बेनिफिट लिफ्ट अप करेंगे, या अगर हम अप्लाई करें तो वो हमको 5 साल की टर्म्स में रखेंगे या 10 साल की टर्म्स में डालेंगे? जी। सो आप जो अप्लाई करेंगे वो वाइफ की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं? हाँ जी, वाइफ की एक्सटेंशन के लिए। मैं तो ब्रिटिश हूँ और मेरे बेबी दोनों भी ब्रिटिश। जी। तो आपकी इनकम सफिशिएंट है? आपकी इनकम? मैं पहले तो काम करता था और मेरी इनकम सही थी, 18,000 20,000 के भी करीब थी, इससे भी ज्यादा ही थी। तो क्योंकि जब से वो हैपन हुआ है, जब से बेबी बॉर्न किया है, तो फिर अब मैं यूनिवर्सल क्रेडिट पे चला गया। जी सही बात तो है। क्योंकि मैं काम पे नहीं जाता, मैं अपने बेबियों के लुक आफ्टर करना पड़ता है। सही बात है जी, आपकी बात सही है जी। तो वो क्या करेंगे? वो आपको सिंपली वो 10 साल की वीज़ा पे डाल देंगे,
10 سال کی. وہ یہ سرکمسٹانسز یہ نہیں دیکھیں گے کہ لک یہ وجہ ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے, آپ وائف کو لک آفٹر کرتے ہیں, بچے کو لک آفٹر کر رہے ہیں, اس وجہ سے آپ کام نہیں کر سکتے تو آپ کو 5 ایئر روٹ میں رکھنا چاہیے. وہ ایسے کنسیڈر نہیں کریں گے, وہ کیس کو ایسے نہیں دیکھیں گے. وہ صرف یہ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے آپ کے پاس بچے بھی ہے تو آپ 10 ایئر روٹ میں کوالیفائی ہوتے ہیں. نہیں وہ ایسا ہے, ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ ایسا ہے نا کیونکہ جو جون کا جو میرا لاسٹ اسی سال میں جو P60 وہ آیا ہے وہ میرا 20,000 سے زیادہ شو کر رہا ہے نا. اگر ہم ان کو یہ لکھیں کہ میں تو آلریڈی کام کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا, تو اور میری انکم بھی اچھی تھی, میں ہارڈ ورک کر کام کر رہا تھا, تو پھر وہ اگر یہ ہیپن نہ ہوتا تو شوڈ بی 5 years on guarantee. جی 100% رائٹ ہے. But why they cost me put on the 10 years جی آپ کی بات 100% رائٹ ہے, مگر یہ ہے نا کہ اس کا پوزیشن یہ ہے کہ ہم آپ کو آپ کی وائف کی ویزا ریفیوز تو نہیں کر رہے ہیں نا, ہم اس کو یہاں رہنے کی اجازت دیں گے. سو وہ ہوم آفس کا ویو یہ ہے کہ ہماری طرف سے جو کرنا ہے بیسڈ آن ہیومن رائٹس ہم کر رہے ہیں, ہم آپ کو ویزا دے رہے ہیں, مگر وہ 5 ایئرز روٹ میں نہیں رکھیں گے. سو فار ایگزامپل یہ سوچو نا کہ اگر کسی بندے کافی سال سے وہ کام کر رہا ہے, 10 سال سے کسی کے لیے کام کر رہا ہے, اس کی تنخواہ سب کچھ ٹھیک ہے, اور جب ویزا کا جب ٹائم آ رہا ہے تو 1 month بیفور ایمپلائر نے اس کو ریڈنڈنٹ کر دیا, فیکٹری ہی بند ہو گئی. تو ہم اگر اس کو یہ بتاتے کہ بھائی یہ دیکھو کہ میں تو 20 سال سے میں تو کام کر رہا ہوں, اتنے پیسے مجھ کو مل رہے ہیں, یہ تو میں کیا کروں مجھ کو اگر ریڈنڈنٹ کر دیا تو. مگر ہوم آفس والے وہ نہیں دیکھیں گے نا, وہ اس کے جو رولز ہیں نا وہی دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ کام کر رہے ہیں یا نہیں, اگر ابھی کام کر رہے ہیں ابھی انکم کیا ہے, اگر نہیں ہے تو پھر ہم آپ کو 10 ایئرز روٹ پہ ڈال دیں گے. سو وہ اس نے سسٹم ایسی بنائی ہے کہ وہ ڈیٹیل میں وہ آپ کا جو سرکمسٹانسز ہے اس ٹائپ آف کیس میں وہ نہیں دیکھتے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ میٹ دا ریکوائرمنٹس, اوکے یو کین گو آن ٹو دا 10 ایئر روٹ. وہ اس کا اپروچ ہے اس میں. اچھا, مگر آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کرنا چاہے تو, and I wish you the best, مگر in my experience وہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. Okay. So they have any other option like they can, because the physio coming because she is like paralyzed, and they can possible like they straight away give it to indefinite or British passport because if she go to the visit for the European countries or difficult to جی unfortunately کوئی سسٹم ایسی نہیں ہے. There's no system, unfortunately. Sorry about that. Chalo. But thank you very much for your call. Thank you. We'll take our next call. Whoops, sorry, that's dropped. Try another one. hello. Assalamu alaikum. ہاں جی وکیل صاحب سے بات کرنی ہے. جی آپ لائیو ہونے ہیں, جی آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا کوشچن. جی ہاں جی میں پوچھنا تھا اپنی ممی ڈیڈی کے بارے میں جو انڈیا سے آئے ہوئے تھے, میں نے ادھر کیس لگایا ہوا ہے ان کا, میرے پاس ڈیفینیٹ ہے. جی ٹھیک ہے. اپر ٹرائبیونل میں گئے تھے ہم لندن میں, اور وہ 3 مہینے ہو گئے, کوئی ابھی کورٹ کا کوئی ڈیسیژن نہیں آیا. وہ وزٹ ویزا پہ آ رہے تھے. جی وزٹر پر آئے تھے, ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, میں لڑکا ایک ہی تھا, تو دیکھ بھال ادھر میں نے لگایا ہوا کیس. اور تو پیرنٹس ابھی یہاں ہے, یو کے میں ہے. ہاں جی. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ وہ فرسٹ ایئر ٹرائبیونل میں گئے تھے. فرسٹ میں گئے تھے. ہاں جی فرسٹ میں گئے تھے. فرسٹ میں کیا ہوا تھا؟ فرسٹ میں نے تو بول دیا تھا لڑکیاں دیکھ بھال کر سکتی ہیں, جو میں نے اپیڈیٹ. ہاں وہ نارمل یہی کہتے ہیں. جی ہاں جی. تو جو اپر ٹرائبیونل نے بولا تھا کچھ نہیں بولا, ریزرو کر کے رکھ لیا, ابھی ہم لیٹر میں ڈالیں گے. جی سو اپر ٹرائبیونل کی اپیل آپ نے کب ڈالی تھی؟ 3 مہینے ہو گئے. 3 مہینے ہو گئے کورٹ میں گئے ہوئے ہم, جب اپر ٹرائبیونل میں گئے تھے 3 مہینے ہو گئے. سو اپر ٹرائبیونل میں بھی آپ کی ہیئرنگ ہو گئی؟ جی ہاں جی ہوگی. ہاں جی. سو فرسٹ ایئر ٹرائبیونل میں آ گئے تھے, اپر ٹرائبیونل میں بھی ہیئرنگ ہوگی. ہاں جی جواب نہیں, ابھی ویٹ کر رہے ہیں. آپ کا جواب نہیں آیا اس کے بعد؟ کوئی جواب نہیں آیا. وہ وہی پوچھنا چاہتا ہے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ادھر سے آنے کو؟ within 2 weeks 1 month. اچھا 2 weeks 1 month. ہاں جی. آپ ایسے کرو نا کہ آپ ایک کام کر سکتے ہیں نا, سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر جو جج ہے اگر وہ if the judge is off ill اور ایسا کچھ ہو گیا ہے تو اٹس پاسبل کہ ڈیلے ہو سکتا ہے. آپ بیسٹ ہے نا یہ کرو کہ آپ خود یا آپ کے لائر کو کہو کہ وہ فون کر کے چیک کرو نا کہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر ریئلی 3 months ہو گئے ہیں تو 1 possibility یہ ہے کہ آپ
अपर ट्राइब्यूनल में लेटर लिख सकते हैं टू दी अपर ट्राइब्यूनल के जो मेन जज होते हैं ना, उसको लिख सकते हैं कि लोग हमारी हियरिंग हुई थी 3 months ago, वी वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड लुक इनटू दिस। बिकॉज 3 months अपर ट्राइब्यूनल के डिसीजन के लिए, जब आप गए थे हियरिंग में और हियरिंग में के बाद 3 months हो गए और डिसीजन नहीं आया, थोड़ा सा अनयूजुअल है जी। इन माई एक्सपीरियंस नॉर्मली 2 weeks 1 month में आ जाता है। तो आप ऐसे करो, आप उसको फ़ोन करके पूछो या आपका वकील लॉयर को कहो कि वो फ़ोन करके पूछे, और इसके बाद आप एक लेटर लिख दो और उसको कहो कि हम वेट कर रहे हैं डिसीजन के लिए। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा, थैंक यू आपका कॉल के लिए, थैंक यू वेरी मच। मेहरबानी। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉल, थैंक यू। आई विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, आप लाइव होना है जी, आपका क्वेश्चन क्या है? बड़ी मेहरबानी जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब अभी लाइव है जी, आपका क्वेश्चन क्या है? जज़ाकल्लाह। मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। आप ब्रैडफोर्ड से? जी हाँ, ब्रैडफोर्ड के करीब ही है जी। जी चलो, मैंने नंबर देखा तो इसलिए जी। मैंने ये पूछना था कि ये जो नए केसेस हैं, एग्जाम्पल बच्चा यहाँ पर हो जाकर मुल्क में मैरिड हो जाए तो उसको अप्लीकेशन करनी है, तो उसका वेज जो है वो 18,500 ही है जी, 18,600। 18,600 जी 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 जी। तो इसमें कोई कंसेशन वगैरह आई या नहीं आई? इसमें रियली एक ही कंसेशन है, रियली इन रियल लाइफ एक ही कंसेशन है कि अगर जो बच्चा है, अगर उसको केयरर्स अलाउंस मिलता है क्योंकि वो कोई डिसेबल के लुक आफ्टर करता है, या तो वो ख़ुद उसके पास कोई डिसेबिलिटी है और इसलिए उसको कोई डिसेबिलिटी मिलती है, तो वो लोग को 18,600 का वो रिक्वायरमेंट है, वो उसको मीट नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। सो केयरर्स अलाउंस अगर मिलता है या तो कोई डिसेबिलिटी बेनिफिट्स मिलती है, उसके लिए 18,600 का रूल नहीं है। और इसमें यह भी है कि अगर 18,600 की इनकम नहीं है तो 1-2 और भी रास्ते होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 जॉब्स भी बता सकते हैं, या तो अगर उसके पास कोई सेविंग्स है तो वो सेविंग्स भी बता सकते हैं। वो जॉब और सेविंग्स, वो काफ़ी वो कॉम्बिनेशंस है जिससे वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। मगर इसमें मेनली 2 थिंग्स ही होता है। 18,600 का रिक्वायरमेंट अप्लाई होगा अनलेस जो अप्लाई कर रहा है स्पॉन्सर यहाँ जो है उसको केयरर्स अलाउंस या डिसेबिलिटी बेनिफिट्स मिल रही है। रूल्स में तो और भी लिखा है कि इन सर्टन सर्कमस्टांसेस थर्ड पार्टी सपोर्ट इज़ परमिसेबल, बट इन रियलिटी वो एक्सेप्ट नहीं करते। मैं ये करूँगा कि हम अभी नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स में ब्रेक लेने वाले हैं। आफ्टर द ब्रेक व्हेन आई कम बैक, तो आई विल आंसर दिस क्वेश्चन in slightly more detail, the 18,600 rule and the exemptions to that. We'll be back inshallah in the next couple of minutes.